Hello friends, welcome to CEC Gurukul Live Lectures. Dear friends, this is our another session on career counseling called Pratibha Samvardhan, and today we are here to empower you, to show you the right path, to show you the road where you can move ahead, where you can make your careers, and from where you can be the torch bearers, where you can change somebody's life by empowering them. Dear friends, we are going to talk on the roles of special educators, specifically in schools, or the special educators play pivotal role in different areas wherever they find the children with the special needs. So friends, for this discussion, we have with us in our studios Ms. Shabana with us, and we would like to tell you all that she's a counseling psychologist and she has been extensively working with the children with special needs as well as with the special educators. She is empowering each one of them so that they could find a better world. Currently, she is working with DAB Shrestha Vihar School as well as a freelancer too. She is giving her impetus. So let's welcome our guest, Ms. Shabana. Hello, ma'am. Welcome to the session. First of all, our topic of discussion is, it is very, very thought-provoking because when we think beyond ourselves and we think, yes, this is the area, this is the field where I can move and where I can change somebody's life, it directly touches your heart. So first of all, the question is, why do we need special educators, specifically in schools? See, with the changing scenario, we know now a lot of need of special education is there. Why? Because special need children are increasing in society. They were always there. Nobody was seeing them. But जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, we are moving forward, we are seeing जब हर चीज़ में हमने पैरालंपिक्स तक देखा है, तो those children are really doing well when guided. Special need is just nothing but just one way of life which they need different. It's like we wear specs, it's like we need a big chair to sit, it's like I need a support to walk. So once years before, in maybe 2 generations back, even spectacles were seen as a taboo. Chashma pehanti hai, andhi hai. But now we don't even see how many people in the room notice it. So that is a special need. So we are moving towards different needs where neurological disabilities are there, where physical disabilities are there, but other areas of the child are really well. So there comes the role of special educator to help those children with that one field where the child is weak, and with help he can move and lead a good life and not be dependent on others forever. Basically empowering them so that they can do n number of things which usually we people do, those who believe that we are the best one out. So basically empowering to empower those children. It brings a change in the life of child and the parents as well, because parents don't know what to do. They keep feeding the child, they keep lingering on the child, they go for treatments, but they don't know how to make them take care of themselves, how to make them learn small things of self-care which can make them self-dependent. So though we have n number of special schools these days, still we are talking about inclusive education. Now what this inclusive education is? Inclusive education is, see, inclusion is needed everywhere. Most of the things we have included. We in the schools, especially where education system is there, we talk about all the religions being together. We talk about admissions without I mean, there is no gender bias there. There is no color, caste, creed bias there. So now only one sect was there which was not included till yet, which was the special need children. So to make inclusion a complete setup, inclusion in terms of education only sees about special need. Inclusion is like including everybody in the society equally and giving equal opportunities, whatever needed by the child. So specifically when we talk about these children, they were out of the school yet. And yes, there were special schools, but when we talk about special schools, they are very, very, very few in numbers. So most of the not very severe kind of children, they are just left out at home. So this inclusive education had brought them to school and they are doing really well.
And if I'm not wrong, in a sense, we are taking each one of them in the mainstream, live the life as everyone is living. So, do we believe that inclusive education will, or does it provide the same platform to the kids who are with the special needs? See, with few accommodations, yes. It is helping. When it started initially, I'm here from 20 years, I've seen how inclusive education being starting in the schools. So in initial stage, yes, we were finding a lot of difficulties because the setup was not there, the teachers were not, aware कि अचानक से एक बच्चा आ गया, उसके लिए क्या करें, धीरे बोलें उसे तो समझ में भी नहीं आता है, तो they were not aware. But with training, with small accommodations, with the help of a special educator, with training of our teachers, it has been now running smooth. The children's usually they attend normal school like any other child with those small accommodations. Like if the child is on wheelchair, the chair in the class, there is a space left where he can just go and place his chair and sit with them, not away. So small accommodations are needed, and it is really helping children also. See, suppose if a child is mild, in any disorder, and if we send that child to a special school, how will he learn to upgrade when he will not see children who are better than him? So because children learn the most by observation, the basic learning is observational learning. We see our parents doing, behaving, and we learn languages, behaving, attitude building. The initial stage is observation. So the first thing which inclusion gives is the observation. They look how other children behave, and it does not only help them, it helps the other children also to adjust with them, to be with them, to be more empathetic, to be more understanding, and they are also growing better in personalities. So I indeed say it is it was a good step, and it is really doing well. And then in a kind of heart-to-heart talk between the kids, in a normal school, when kids go to the school, we have students from the kids from the different strata, and how they mingle with each other, and how they learn, and how cultural communication exists within the school. Definitely such inclusive education will help, or it helps the students Exactly. to learn. See, for parents now, normal children also, if we talk about normal children also, they are children for us. If I have a 5-year-old child, maybe I'm not talking to the child as if he's a 5-year-old child, because for me, he's a small child and only one. When he goes to school, then he sees other children and learns much more things, more bigger communication, bigger sentences to use. Similarly, a special need child learns so, and sees different kind of communities, and see different kind of people. So apart from caregivers and parents, he learns how to communicate, he learns how to survive, he learns how to come out of his issues, his concerns, his own ideas. So very important. Very important, and here the role of the special educator becomes very Yes, important. this inclusion has silver lined the need of counselors, special educators, and all mental health experts in the field. Why? Because special educators are the one who train these children. How to train these children to, there are few specific, traits which are to be touched. A normal teacher, yes, can help the child, but she may not know where exactly the child lies, where exactly the problem is. So the special educator will touch that area, help that child, empower the child, and send back to the class. So with the help of a special educator and accommodating teacher and understanding teacher, the child really goes way along. My students are now giving 12th boards and 10th boards easily. If I remember, around 15 years back, it was difficult. After 6th, 7th, parents used to take them out of the school. Okay, my child is not able to do anything. But yes, special educators have really done a good job now. No, it is not a very easy task, because you are not dealing with a child who usually goes to school, who study, who gives the assessment, and the normal life is quite Teaching in different. itself is not very easy, because dealing with around 30, 40, 50 children in a class with different personalities is already a very challenging role.
Teaching or training a special need child, of course, this is very challenging. The special educator should be very empowered. She or he should know basics. She should be aware of the child milestones. A lot of things she should have in her brain to train that child. And above all, attitude, very good tendency that I need to help this child. So it is challenging, but the training and the biggest challenge is each child is different from the other child. No two children are dealt similarly. We make IEPs, individual intervention plans, now educational plans. Now no two children are there where we can make single IEP. For each child a separate IEP is made. So yes, it does makes it challenging, but with the good attitude and with the regular training and upgrading yourself, one has to work on himself or herself first. Regularly. When you are able to understand yourself, then only you are able to give to the society or the children with the special needs. Foremost is, whenever we see a special need child, we feel very sympathetic. Now, just like doctors, we need to come over that. We cannot, feel sorry for the child. Oh my God, what has happened to you? No. We just feel that another blank slate has come and we need to give the colors to that child. And if we feel empowered, child learns. Child sees all the eyes. I know what parents are feeling, what my teacher is feeling. When we feel that yes, you can do, he feels. So we need to convert, the sympathy into empathy. Empathy is the thing which is needed. This child needs this. चाहे मुझे उसे धक्का देना पड़े उस वक्त, चाहे मुझे उसे पुश करके व्हील चेयर पे से उठाना पड़े, है ना, चाहे मुझे उसके हाथ में दर्द हो रहा है, बोल रहा है, लेकिन मुझे उसको लिखवाना है. तो just like doctors, we need that empathetic attitude. No sympathy needed anywhere. Neither these children need sympathy. Nobody needs sympathy. So that empathy is needed. उस दर्द को खुद महसूस करना, उस परेशानी को खुद समझना कि क्या बीत रही है इस वक्त. कहते ना कि वो कहावत है कि किसी और के जूते में पैर रख के देखना कि क्या तकलीफ है. जस्ट द सेम. देन ओनली यू कैन प्लान. IEP प्लान करने के लिए उस बच्चे के हिसाब से सिर्फ वो रिपोर्ट जो होती है ना उसकी ID की या उसकी डिफ़िकल्टी की इज़ नॉट इनफ. हर स्पेशल एजुकेटर हैव बीन डूइंग इट सिंस ईयर्स. माई स्पेशल एजुकेटर्स हैव बीन डूइंग इट सिंस ईयर्स की दो वी गेट अ रिपोर्ट कि इस बच्चे को ये डिफ़िकल्टी है, उसके बावजूद वी डू अ क्लिनिकल असेसमेंट कि वेयर डज अ चाइल्ड लाई. अब 74 IQ के तो और भी बहुत बच्चे हो सकते हैं, है ना. ID इज़ बिलो 70 IQ. 64 IQ हो सकता है, उसका 54 IQ हो सकता है, उसका 59 IQ हो सकता है, दो बच्चों का 59 IQ हो सकता है. लेकिन मे बी दिस चाइल्ड needs different help, this child needs different help. So when we make that IEP, we need to communicate with the child and make separate plans. Now, one of the most important questions, you have already explained who can or what personality traits are required to be a special educator. Now the question is, it's opposite. किसको नहीं बनना चाहिए special educator? किसको नहीं बनना चाहिए? See, if you are very ambitious of quick results, कि एकदम रातों रात कुछ बड़ा करना है, तो यहाँ रातों रात कुछ नहीं होता. Here, yes, ये पेशेंस वर्ड मैं और कहीं यूज़ नहीं करती हूँ, यहाँ ज़रूर यूज़ करती हूँ. यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस. बच्चे के स्पीड से चलना है. आप कितना भी तेज़ चल सकते हो, डज नॉट मैटर. बच्चा की स्पीड से चलता है, मुझे उसकी स्पीड भी बढ़ानी है, लेकिन उसकी स्पीड से उसकी स्पीड बढ़ानी है. तो वो टेंडेंसी चाहिए. तो इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी यूजुअली रिमेन्स इन हरी, टाइप ए पर्सनैलिटीज़ यूजुअली जो बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत सारे काम उनको बहुत सारे एक साथ करने हैं, यूजुअली दे शुड नॉट गो फॉर इट. मनी मेकिंग है, ऑफ कोर्स है, लेकिन वही बात है कि अगर आपके सेशंस का आउटपुट नहीं आएगा तो आपके पास सेशंस नहीं होंगे, मनी मेकिंग भी नहीं होगी. तो what you will give, you will get back. Rule of life, rule of universe. आप जैसा देते हैं वैसा प्राप्त करते हैं. तो अगर आप दिल से किसी के लिए, किसी बच्चे के लिए उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो आपके प्रयास निरर्थक नहीं जाएंगे. बिल्कुल भी. मेरे तो नज़र में पिछले 20 सालों में कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने इम्प्रूव नहीं किया हो.
है ना। हाँ, हर बच्चे की एक कैपेबिलिटी होती है, कई बार वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, कई बार वो IQ रुक जाती है, क्योंकि हम बचपन से लेते चलते हैं। तो किसी किसी बच्चे की आफ्टर 12, 13, 14 वी हैव सीन सिवियर केसेस में कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बट स्टिल वी डू नॉट स्टॉप देयर। IQ बढ़ना बंद हो गया, हम मे बी फिर यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं पर्पज़ है, पर्पज़ ये भी है कि हम साइको एजुकेट करें पेरेंट को उस बच्चे की नीड्स के हिसाब से, है ना। इफ़ दैट इंक्लूसिव सेटअप इज हेल्पिंग द चाइल्ड और नॉट, मे बी बिहेवियरली अगर वो बच्चा नहीं ले पा रहा है तो साइड बाय साइड उसको रेफ़र करें हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए भी, हम उसे रेफ़र करें स्पीच थेरेपी के लिए भी। तो सब मिल के, और ये काम भी कहीं ना कहीं काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर्स का ही होता है कि वो बच्चे के नीड समझ के और पेरेंट को साइको एजुकेट लगातार करना। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो पेरेंट का साइको एजुकेशन है। दे डू नॉट वांट टू, अगर कोई माइल्ड इशू है तो पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। अब तो CBSE बहुत सारे रिलैक्सेशंस देती है स्कूल में, उसके बावजूद उनको लगता है कि वो दे डोंट टेक इट एज अ राइट, है ना। जैसे हम बच्चों को एम्पावर करते हैं जो माइल्ड हैं, जो जिसने सिर्फ डिसलेक्सिया है ना, IQ अच्छा है बट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, दे आर नॉट लो IQ पीपल। LD है जिनको डिसलेक्सिया है, द चिल्ड्रन ऑल्सो, मैम आई डोंट वांट एक्स्ट्रा टाइम, व्हाट विल अदर्स से। सो एम्पावरिंग देम ओवर दैट, एम्पावरिंग द क्लास ओवर दैट, ये उसका राइट है एंड यू कैन नॉट से एनीथिंग, है ना। वो बच्चा खड़ा होकर खुद से बोल सके इन्विजिलेटर को कि सर आई एम एन LD चाइल्ड, आई want 1 hour extra and I will get it, मतलब I have my extra। तो preparing them for that कि अपने अंदर जो कमी है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, उसको कैसे आप ताकत बना सकते हो, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाना। LD लोगों को तो अब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी हैं बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स एंड काउंसलर्स। देयर आर मेनी कंपनीज हु आर हायरिंग ओनली LDs क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम है, बाकी लॉजिकल रीजनिंग इनका बहुत अच्छा चलता है। अब ऑटिस्टिक बच्चा है, जैसे वो दुनिया को देख सकता है, हमारा आप देख ही नहीं सकते, वेरी ट्रू, है ना। उस तरह से हम आप देख ही नहीं सकते, तो व्हाई नॉट यूज दैट। we have seen many of the autistic students in the area of expressive arts, they are excelling। was most probably autistic, तब डायग्नोज नहीं है, लेकिन उनके जो सिम्टम्स हैं, उनकी जो बायोग्राफी बताती है ही वाज एन ऑटिस्टिक, है ना। तो उन्हीं वही देख सकते थे एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, हम आप सोचेंगे भी नहीं, एप्पल गिर गया तो गिर गया, राइट। सो आप नॉर्मल ऑटिस्टिक बच्चों से बात कीजिए, बहुत आपको जीने का ही मतलब चीज़ों को देखने का एक नज़रिया अलग दे देते हैं वो। तो मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ बच्चों से। हाउ गुड इट इज़ व्हेन यू आर एम्पावरिंग समवन जिसको डिसेबिलिटीज़ हैं और आपने बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर आपने उसको एम्पावर किया है कि वो अपना होराइजन बड़ा कर सके, दुनिया को उस एंगल्स देख सके जिससे वो देखना चाहता है। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। हाँ, ये हम लोग अभी बेसिकली ये डिसेबिलिटी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, वी कॉल इट डिफरेंट एबिलिटीज, बिकॉज डिस लगते ही ना वो बच्चे को लगने लगता है कि वाई मी, पेरेंट्स को लगने लगता है वाई माई चाइल्ड, ऐसा क्या हुआ। कुछ नहीं कर सकते, अब इतना कुछ आ रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ CWSN चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, हर बैच में हर सेशन में दे आर मोर इन नंबर्स। तो डिफरेंट एबिलिटी हम इनको बुलाते हैं क्योंकि उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, उसी डिफरेंट एबिलिटी को एम्पावर करना है। नाउ मैम अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अब क्योंकि मुझे किसी को एम्पावर करना है तो मुझे खुद एम्पावर होना है। सो हाउ शुड आई स्टडी, हाउ व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, हाउ कैन आई गो एंड आई मीन ऑप्ट फॉर दिस करियर। सी मेंटल हेल्थ में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट करियर्स हैं। एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकैट्रिस्ट हो गया एंड स्पेशल एजुकेटर्स हो गए। नाउ जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो बेसिकली जो हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बैचलर्स, उनका ज़रूरी है बैचलर्स मास्टर्स साइकोलॉजी में, फिर दे डू MPhil इन साइकोलॉजी। जो साइकैट्रिस्ट्स हैं जो सारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, तरह के डिसऑर्डर्स सिवियर लेवल पे और मेडिसिन दे सकते हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर्स में, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें मेडिसिन चाहिए होती हैं। बोथ counseling clinical psychologist and a psychiatrist works hand in hand. The therapeutic part is seen by the clinical psychologist and medicinal part is seen by the psychiatrist. Psychiatrist बनने के लिए आपको MBBS करना है और MD में psychiatry लेनी है, psychology लेनी है। फिर आता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो बैचलर्स मास्टर्स के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स के बाद भी कराती हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मास्टर्स के बाद वाला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया जाए, बिकॉज दैट इज़ गिविंग मच मोर एम्पावरमेंट टू द काउंसलर्स। क्योंकि वंस यू आर इन द फील्ड
आपके पास जो पहला इंसान आएगा, यू डोंट हैव स्पेस कि आपने कुछ चीज़ें गलत करी उसके बाद आप सीख गए, आप नहीं कर सकते गलत, पहले केस में भी आप गलती नहीं कर सकते। तो चौथा है स्पेशल एजुकेटर्स। स्पेशल एजुकेटर्स अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ बीएड में स्पेशल एजुकेशन किसी भी ग्रेजुएट को दे रही हैं। डीएलएड आपने 12th में किया, 12th पास किया, आप डीएलएड कर सकते हैं, एक डिप्लोमा है, और बीएड है स्पेशल एजुकेशन में, जो आप ग्रेजुएशन की बात कर सकते हैं। आई विल प्रेफर कि अगर प्लान बन गया है, आप पहले से अगर जानते हैं कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो प्रेफरेबली फिर साइकोलॉजी में करें, चाइल्ड साइकोलॉजी में प्रेफरेबली। अगर आपके आसपास जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर चाइल्ड साइकोलॉजी ऑप्शन है तो उसमें करें, क्योंकि बच्चों के माइलस्टोन्स जानना वो आपको स्पेशल एजुकेशन में हेल्प करेगा। आप वहाँ पढ़ेंगे, एक चैप्टर, दो चैप्टर, एक सब्जेक्ट आपका वहाँ भी होगा चाइल्ड साइकोलॉजी, बट अच्छे से एक्सटेंसिव जितना पढ़ेंगे, जितना ट्रेन होंगे, उतना ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बच्चे को समझने की में, और जब बच्चे को समझ जाएंगे तो उसकी जितनी भी दिक्कतें हैं उनसे उनको निजात मिलेगी। और इन फील्ड्स के लिए मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि देखिए आरसीआई है जो रिकॉग्नाइज करती है, जैसे मेडिकल्स के लिए एमसीआई होता है, इन सारे ही कोर्सेज के लिए आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहाँ से लाइसेंस लेना होता है। तो लाइसेंस जगह से करें, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, जहाँ का जो यूनिवर्सिटी आरसीआई से एफिलिएटेड है वहीं से करें, क्योंकि आरसीआई के कुछ सेट प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें कि बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें उनका ख्याल रखते हैं वो। तो आरसीआई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ही करें, साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कोर्स, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स, तो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। और नॉट ओनली इन योर कोर्स बट इन करियर ऑल्सो, क्योंकि जितने भी रेप्यूटेड प्लेसेस हैं वो आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड लोग ही हायर करेंगे। स्कूल्स हो गए, लोग हॉस्पिटल्स हो गए, हर जगह है जॉब आजकल। लोग आजकल अपना सेंटर खोल के बैठते हैं। आजकल नया कॉन्सेप्ट खुला है कंबाइंड खोलने का, एक साइकेट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, दे मेक, तो देयर ऑल्सो दे विल लुक फॉर आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड पीपल। So this is one of the most logical point you have raised over here, because most of the people might not be knowing this, कि ये भी कितना RCI approved कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, चेक कि उसका वो, हर यूनिवर्सिटी किसी एक जगह से, जैसे डीयू है या कोई भी, वो उसका वो कोर्स जो है वो आरसीआई से अफिलिएटेड होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा, करिकुलम ही उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है आरसीआई, तो उसको चेक किया जाए और उसके बाद ही, है ना, अवेलेबल है सब वेबसाइट्स पे, नेट पे, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ऑल द डेटा ऑफ सच काइंड। Wonderful, ma'am. Wonderful. Thank you for giving us this very, very vivacious session, and it is a thought-provoking session. And I believe that a number of students who might be watching us right now, the fire inside them might have ignited, and I believe that this fire turns out to be, showering the rain, so that it could be turned into peace, solace, and comfort really for needed, those. because we need more and more. I mean, a big number of expert hands in the field. You're very less as compared to the need. So we need more and more of special educators, the counselors, the psychologists, so that they could bring the turning point of the life of those who basically needs you. So friends, we would be discussing more on this topic. Keep watching us and keep writing us, keep giving your feedback. Thank you so much.